Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT Chapter of Perimeter and Area. This is 6th question of its exercise 11.3. So the question says that Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of lace required and also find its cost if 1 meter of the lace costs rupees 15. So हमें सर्कुलर ट्रेवर की एक डायमीटर गिवन है. सो डायमीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर. सो रेडियस हो जाएगी हमारे पास d/2 इज इक्वल टू 1.5/2 इज इक्वल टू 0.75 मीटर. देन हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड एंड सो लेंथ ऑफ लेस हमें फाइंड आउट करनी है. सो लेस हम लगा रहे हैं सर्कुलर टेबल की एज पर. सो मीन्स इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें. सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 एंड रेडियस है हमारे पास 0.75. सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.71 मीटर. एंड देन हमें फाइंड आउट करना है फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट रुपीज 15. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस हमें गिवन है 15 रुपीज. सो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस is equal to 15 into 4.71 is equal to, इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 70.65 रुपीज. सो कॉस्ट ऑफ लेस इज 70 रुपीज 65 पैसे एंड लेंथ ऑफ लेस इज 4.71 मीटर. थैंक यू.